हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एमएस का ऑल न्यूज। जैसे कि आप सभी को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को संन्यास ले लिया, तो इसके रिगार्डिंग पूरे वर्ल्ड में उनको काफ़ी सारा अप्रिसिएशन मिला है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं टॉप 10 अप्रिसिएशंस को देखेंगे जो कि नॉन इंडियन है। इस लिस्ट में फर्स्ट नाम है ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग का। उन्होंने अपने इंस्टा पेज पे खुद का धोनी के साथ एक फोटो लगाया और उसके नीचे कैप्शन में लिखा था कि बधाई हो धोनी आपको इतने बढ़िया इंटरनेशनल कैरियर के लिए, और आपके साथ ऑलवेज कॉन्टेस्ट में एंजॉय किया हम लोगों ने। जीते हुए रथ को रोकना चाहेंगे दिल्ली के खिलाफ। जैसे कि हम लोग को पता है आईपीएल होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग इन्होंने बात किया था। अगर आपको रिकी पॉन्टिंग का कैप्शन पढ़ना हो तो आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम ऑस्ट्रेलिया के ही महानतम विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट का है। जैसे कि हम सभी को पता है कि धोनी एडम गिलक्रिस्ट को अपना आइडियल मानते हैं। इसमें एडम गिलक्रिस्ट ने इंस्टा प्रोफाइल में अपना और महेंद्र सिंह धोनी का एक फोटो डाला था। उसके कैप्शन में लिखा था कि आपके खिलाफ खेलने में हमेशा ही मजा आया है। आप अपनी ही स्टाइल में, फ्लेम्बॉय स्टाइल में, कामनेस के स्टाइल में संन्यास ले लिए। यू डिड यू ओन वे, द माही वे। उन्होंने इसका नाम माही वे रखा है और उन्होंने बधाई दिया एमएस धोनी के अपने अचीवमेंट पे। अगर आप सभी को उनका कैप्शन पढ़ना हो तो आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस लिस्ट में तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर शेन वाटसन का है। आप सभी को पता है जैसे शेन वाटसन चेन्नई सुपर किंग्स के तरफ से खेलते भी हैं। उन्होंने अपने इंस्टा पेज पे धोनी और खुद का सीएसके के ड्रेस में एक फ़ोटो अपलोड किया और उन्होंने धोनी को बधाई दिया उनके फिनोमिनल इंटरनेशनल कैरियर के लिए। उन्होंने लिखा कि आपको आपके ऊपर गर्व होना चाहिए जो आपने फील्ड के ऊपर एज ए प्लेयर और एज ए लीडर प्राप्त किया है। उन्होंने आगे लिखा कि आपके खिलाफ खेलने में ऑलवेज ही मज़ा आता था और अभी जब आपके साथ खेलता हूँ तो ये मेरे लिए एक रियल ट्रीट है। और उन्होंने लिखा है कि आई कांट वेट फॉर एक्साइटिंग आईपीएल 2020। इस लिस्ट में फोर्थ स्थान पे हैं इंग्लैंड के महान बल्लेबाज केविन पीटरसन। उन्होंने अपने इंस्टा पेज पे मजाकिये रूप से एक वीडियो अपलोड किया। आइए देखते हैं उस वीडियो को। MS, my great buddy. What a career, what a stellar career. What an amazing career, what a magical career. One career that you should be so proud of. All of India, all of the world of cricket are just so blessed to have been able to witness one of the most magical careers. I think, but now at the end of your career, there's one thing. Just that one thing. You never got me out. It was referred at Lords, and the continual stick that I get from you and your fans that I'm your first test wicket, you know, I know, it never happened. Okay? Now that you're done, let's just clear the air. It never happened. Anyway, buddy, what an awesome career. Awesome. Congrats, and welcome to the club. We're all out. इस लिस्ट में नेक्स्ट प्लेयर हैं डीजे ब्रेवो। डीजे ब्रेवो धोनी के साथ आईपीएल टीम में हैं। दोनों एक साथ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। डीजे ने अपनी इंस्टा प्रोफाइल पे धोनी और खुद का और धोनी और जीवा के साथ अपना फोटो अपलोड किया है और उन्होंने अपने ही अंदाज में एक गाना भी डेडिकेट किया है महेंद्र सिंह धोनी को। चलिए सुनते हैं उनका गाना। इस लिस्ट में अगला नाम शेल्डन कॉटरल का है, जिन्हें हम सैल्यूट मैन भी बोलते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा, टू स्टेट्समैन गेम रिटायर्ड टुडे।
उन्होंने आगे लिखा है कि मैं औरों की तरह ये प्रिटेंड नहीं कर सकता कि मैं आपको जानता हूँ। मैं बस यही कह सकता हूँ कि मैं आप लोगों का फ़ैन हूँ और मैं बस फ़ैन के रूप में आप लोगों को जानता हूँ और आपके देशभक्ति के लिए मैं आपको जानता हूँ। उन्होंने आगे लिखा है कि MS धोनी एक मिलिट्री मैन है और एक आइकॉन है। इस लिस्ट में अगला नंबर ऑस्ट्रेलिया के इटली का है। उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपना और धोनी का एक फ़ोटो शेयर किया और उसके साथ उन्होंने लिखा है, बधाई हो MS धोनी ऑन योर आउटस्टैंडिंग कैरियर। इसके साथ उन्होंने लिखा है कि डेफिनेटली हम लोग का ऑन फील्ड काफ़ी बैटल था, लेकिन उससे ऊपर हम लोग का म्यूचुअल रिस्पेक्ट था। इस लिस्ट में अगला नंबर माइकल वॉन का है, जो कि इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं। अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने धोनी के रिटायरमेंट के ऊपर टिप्पणी की थी। आइए देखते हैं उस रिटायरमेंट का एक चिंटू सा वीडियो क्लिप। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आपको देखना है, आप देख सकते हैं। I would say that in my time he's the greatest white ball captain that I've ever seen. He's just a master from behind the stumps, as guiding his team through all the pressure situations. He almost brought pressure onto his team because he loved it that much. And again, you could argue that he's the greatest finisher in white ball cricket that we've ever seen. Again, he used to, block it out, block a few maidens to build up that runway, knowing that he had the power to finish it off at the end. The helicopter India's cricket, you've got Sunil Gavaskar, you've got Sachin Tendulkar, Virat obviously he's taken the mantle, but MS Dhoni is right there at the top in terms of the love that they have for him over in India. इस लिस्ट में अगला नंबर इंग्लैंड के प्रेजेंट विकेट कीपर जोस बटलर का है। जैसे कि हम सभी को पता है कि जोस बटलर अपने पिछले इंटरव्यू में, अपने कई सारे इंटरव्यू में ये बता चुके हैं कि MS धोनी उनके आइडियल हैं। तो जोस बटलर ने अपने इंस्टा आईडी पे धोनी के साथ एक फोटो शेयर किया और उसके कैप्शन में लिखा कि मेरे हीरो और मेरे जैसे मिलियंस के उन्होंने बधाई दिया धोनी के इनक्रेडिबल कैरियर के लिए। उन्होंने आगे लिखा कि आपके खिलाफ खेल के मुझे ऑनर फील हुआ। इस लिस्ट में लास्ट नाम अपने ही पड़ोसी देश के एक खिलाड़ी को मिला है। उनका नाम शोएब अख्तर है। जैसे कि हम सभी को पता है कि पाकिस्तान के ज्यादातर खिलाड़ी अपना यूट्यूब चैनल खोल लिए हैं, उन्हीं में से एक है शोएब अख्तर। शोएब अख्तर जी ने अपने इंस्टा प्रोफाइल पे एक वीडियो अपलोड किया जो कि धोनी का काफी तारीफ की थी। आइए उनके वीडियो का एक चिंटू सा क्लिप देखते हैं। एक जमाने का नाम, एक मैच फिनिशर का नाम और एक हम्बल इंसान का, जो बहुत ही अच्छा, नहायत नफीस इंसान। MS धोनी just got retired and और he had an amazing run और उसने हिंदुस्तान को बड़ी बुलंदियों पर पहुंचाया। World Cup winning captain, T20 World Cup wins as well. I mean, a giant of the game. Yes, and to pick up on a point Shane Warne made in our captaincy chat yesterday, it's not the average of 38.09. You remember, Shane Warne's very good point was that when a player finishes his career, what do people remember about that player? Not the average or the numbers, but how they played the game and the iconic moments that they were involved in. So I would remember that hitting of the six at the Wankhede Stadium. Straight over my head. Went straight over your head. It's not difficult, mine. Correct. To win that World Cup in 2011, what a fabulous cricketer he was. How do you remember him as the international cricketer? Because you almost certainly probably keep going, I would assume, with IPL, etc. Great captain. Probably the best white ball captain there has ever been, and also just a cool, calm customer under pressure. Great finisher. All those, I know he'll still carry on playing Chennai Super Kings, but a great finisher of a game. The game wasn't won until you got Dhoni out. Until very recently, he paced the innings absolutely perfectly. So that's a good combination when you're a great captain, cool and calm under pressure. Everywhere he's been, whether it be Chennai or India, with the 20 over side in Johannesburg when they beat Pakistan in that final, which arguably brought on IPL and 2020 cricket, and at Mumbai, that iconic moment when he hit that six and they were carrying Sachin around the ground after that. He was involved in some of the great moments of Indian cricket, and a phenomenally calm, cool customer, and did it his own way, really. Even with keeping, he was a pretty good gloveman, very fast hand standing up to the stumps. Very, very fine cricketer. That win that Nasser refers to in the World T20,
changed world game. Yeah, it did, because the IPL came quickly on the back of that. And I suppose he'd be the first generation of Indian cricketer that would be thought of more perhaps for his one-day stuff than his test match stuff. He played 90 test matches, but when you think of Dhoni, you think of those great one-day moments, the 2007 T20, the 2011 50-over World Cup. And that reflected the change that came both in the world game and in the Indian game as well, where T20 in particular became such a fundamental part of the game there through the Indian Premier League. And his generation and the timing of his career encapsulated that change absolutely perfect. We talk of the pressures on Azhar Ali, the Pakistan captain, and the wild support back home. The pressure on the Indian captaincy out there, and the pressure and focus and spotlight that MS Dhoni would have lived under for a number of years. I think that's what makes him special. I can't remember off the top of my head MS ever losing his rag in a press conference or on the field. You know, we also said yesterday in that captaincy thing, you are, responsible for the spirit of the game. MS often played the game the right way, MS Dhoni. So yeah, I think he got it absolutely spot on. And anyone, you've got to be very careful with Twitter, but anyone who's played with MS Dhoni will say that as a captain, they loved him because of that calmness. They always gave the bowler the belief that what field do you want? If you speak to Ashwin, Ravi Ashwin, or anyone, Jadeja, or anyone that he's involved with as a captain, very rarely did MS Dhoni tell him what to do. He would suggest things, but he would say to him, you're bowling, you know what you're doing. And when we saw him round the traps in and around the game, very, very pleasant, very calm, and you wouldn't know he'd have the weight of the world and Indian fans on his shoulders. Incredibly gifted. We saw him in Nagpur, didn't we, Ath? All those years ago, we turned up to Nagpur to watch a net session. Do you remember the shot that we were talking about, that he became famous for, the helicopter shot? Yeah. We saw it in the net for the first time in Nagpur, and we looked at each other and thought, wow. I can't do that. I can't do that. Strong wrists, and he did it in the nets, and that was right at the start of his career. I can't remember whether it was his first test match. It was certainly the first time we saw him. And yeah, it was an eye-catching moment straight away. Thank you guys for watching this video. If you like the video, then please hit the like button and also subscribe to my channel.